many shades of the pandemic threat have changed the connotation of human life. Uncertainty, fear, and helplessness pervade every sphere of our existence. But let us not forget that difficult days are the times when champions are born. In the words of Napoleon Hill, every adversity, every heartache, and every failure carries with it the seed of a greater or equivalent benefit. A deep semblance can be drawn between this philosophy and the struggle for independence of our motherland. And this freedom is best enjoyed when we wake up to the truth that with freedom comes the word responsibility. With these two words, we can etch a better world to live in and truly reverberate the words Vande Mataram. We now have a presentation by the Bulbul highlighting the work done by the NCC and guides during this challenging time. Good morning to my principal ma'am, my teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate this great national event. I feel extremely proud and honored to be present at this auspicious platform. As we all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got freedom from the British rule after many years of struggle by the freedom fighters of India. India has a rich culture and is also known for its unity in diversity, which means India is a diverse nation where many religious people live together having their own different cultures. We shall preserve the Indian heritage and culture to keep our integrity in front of the world, which can be achieved by sharing it with each other. Indian heritage and culture has a very high value and is very unique. This uniqueness becomes our identity in front of the world. There are Scouts associations in more than 216 countries and is still growing since 1907. There are Scouts associations consisting of more than 25 millions and members of more than 300 millions. Scouts helps us to preserve the Indian heritage and culture through principles and methods globally. Thank you. Respected audience, myself from Guides Fraternity. On this auspicious morning of our Independence Day, I find myself honored to be a part of Guides in preserving the culture and heritage of India. The culture of India refers to the thousands of distinct and unique cultures of all religions and communities. One of the oldest and the most distinctive cultures of the world, the Indian culture, is a result of the country's rich and long history, ancient heritages, varied demography, and unique geography. According to the sixth point of the Guides Law, a guide is disciplined and helps protect public property. Means that a guide is disciplined and does not destroy public property. Instead, she helps to save them. This is applicable for historical monuments as well, which bear the traces of our country's rich heritage. And according to the ninth point of the Guides Law, a guide is pure in thought, word and deed. Means that if a guide is pure in thought, she will be pure in word and deed as well. This shows that a guide protects her culture by being pure in thought, word and deed. Lastly, I would like to conclude that a guide spreads the glory of her country's rich culture and heritage wherever she goes and whatever she does. Thank you. Me, as a guide, a very small part of India, of the Bharat Scouts and Guides family, I feel it is my duty to serve the nation with the spirit of patriotism. When we utter duty to country in the Guides promise, we mean the love and affection to our country with the spirit of patriotism. I know at this age it is very difficult to serve moving patriotism to India, but very tiny unrecognizable shows of patriotism to India by millions of citizens of it can bring huge moves, huge changes. 5 very tiny unrecognizable serves of patriotism. Obey the laws of the land. Vote. Be open to all religions and communities. Invest in social work and charities. And last but not the least, reduce, reuse and recycle. But after all of this, I think India is incomplete with every tiny part of it. Thank you.
14th August, our country celebrates freedom from the British rule. Freedom brings color, joy, and true happiness in our lives. This is the day when we pay tribute to the great Indian freedom fighters who sacrificed their lives to get India free from the Britishers. On this day, every year, all Indians rejoice and celebrate their independence. We the Bulbuls also love to move freely in the natural environment and believe in true essence of freedom. Today, India has completed 73 years as an independent nation. Independence Day this year is a test of spirit. We are commemorating Independence Day indoors because of COVID-19 pandemic. We have to be willing to follow the rules, safety precautions, and fight bravely against this COVID-19 pandemic to preserve our freedom. We the Bulbuls express our gratitude and pay tribute to the thousands of Corona warriors who are risking their lives in a mammoth effort to keep people safe from the virus. We wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Music is the literature of the heart. The eloquence of music and its impact on human souls can never be stressed too much. It expresses through melody what even a spoken word fails to convey. Patriotic songs are the natural extension of power music has. 14 students from DPS Ruby Park with an assortment of instruments will now present a rendition of Rag Desh in the form of our national song Vande Mataram, followed by a soulful presentation of Shankar Mahadevan's composition Bharat Bhagya Vidhata by Aryadipta Dev of class 10. सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरम् सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्
Now we have a patriotic song, Teri Mitti by Rajvi Singh of class 5. ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कलियान मेरे जहाँ झूम के पंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरा तेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी इसमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। तीन रंग थे एक चक्र था पुरखों ने जिन्हें था सींचा। ख्वाब था चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता सुन लो है पुकारता सुन लो एक ख्वाब था। ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी ये मांगता हिफाजत है जी ये आस लिए है खरा हौले से हमको कह रहा ओ भारत भाग्य विधाता मत मूंद रे अपनी आंखें जमीन आसमां की कसम तुझे थाम वतन का हाथ उठ। एक ख्वाब था चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता सुन लो है पुकारता सुन लो एक ख्वाब था। पुकारता सुन लो है पुकारता सुन लो है पुकारता
है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता। I would now request our principal, Srimati Joyati Chaudhary, to address the audience. Ma'am, please. I extend my greetings on the 74th Independence Day to all of you. This special day takes us down the memory lane and reminds us of the independence that we gained from the British rule after 200 years of oppressive enslavement. It was the result of a brave fight and sacrifice of thousands of freedom fighters who laid down their lives for the country. I take this opportunity to show my deep respect and gratitude to their memory. As a nation, we have confronted myriad problems, yet we have braved these situations with resilience and marched ahead. We have been able to keep the flame of democracy burning bright and made remarkable achievements. Presently, we are facing numerous unprecedented challenges. The pandemic has affected and changed our lives. Added to it are the ravages of nature and tensions at the international border. But as a country known for its courage and discipline, we will surely emerge out of this strife too. I want to take this opportunity to applaud the contribution of our soldiers who are selflessly protecting our borders. Also praiseworthy are the contributions of the doctors, nurses, and other medical staff who are working diligently, the farmers who have braved natural calamities, the active and the energetic members of our workforce who are treading ahead undeterred, scientists, engineers, entrepreneurs contributing to technological and economic progress, service sector professionals who have earned global appreciation, and also the educators holding the beacon of knowledge high and illuminating the path ahead. In India, knowledge and learning have been revered since the ancient times. When our land was pushed into the backwardness due to the long colonial rule, education emerged as a way towards empowerment. We will continue to strive for the same parameters of excellence. We must ingrain in our young the sacrifice and dedication of all the people who have worked for the advancement of this great nation. With advances in technology, the young minds are much better informed and more confident than earlier. It is a boon that opens a plethora of learning opportunities for them. It should be our continuous effort to meet their learning objectives with traditional values that would teach them to stay strongly committed to the ideals upheld by our nation since time immemorial. As India and Indians march forward, we remain committed to engaging the global community to build a secure and prosperous future for ourselves and for the entire humanity. I am also reminded of the wise words of Albert Einstein, who aptly said, "In the middle of a difficulty lies opportunity." I once again convey Independence Day greetings and extend my best wishes for a bright future. Jai Hind. Bankim Chandra Chattopadhyay, the composer of Vande Mataram, needs no introduction. His Anandamot is set in the background of the Sonnashi rebellion of the late 18th century. The Bengali department will now present a Shruti Natok based on one of the episodes of this famous novel. আঠেরোশো শতাব্দীর শেষের দিক, বঙ্গাব্দ 1176। সেই সময় বাংলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার মনুষ্য কুল কলঙ্ক মির্জাফরের ওপর। বাংলার কর কিন্তু সংগ্রহ করে, থুড়ি লুট করে ইংরেজরা। একই ফসল ভালো হয় না, তার উপর চড়া কর। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। না, এতেও সন্তুষ্টি হলো না। ছড়িয়ে পড়ল মহামারী,
বসন্ত। চারিদিকে তখন কান্নার কোলাহল। বাংলার সেই কালো মেঘ কাটাতে রুখে দাঁড়ায় সন্তান দল। বাবা মহেন্দ্র, পদচিহ্ন গাঁর বাসযোগ্য নেই, পালিয়ে চলো, পালিয়ে চলো। সে কি করে হয়? এত ধন সম্পত্তি সব ছেড়ে? না, আমরা জমিদার, সাধারণ মানুষের মতো আমরা পালিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে কি হবে? হাট নেই, মানুষ নেই, মানুষ নিজের স্ত্রী পুত্রকে বেচে দিচ্ছে, তবুও রেহাই নেই। শহরে গেলেই বা কি বিশেষ সুবিধে হবে? সে স্থান হয়তো এমনই জনশূন্য, প্রাণ রক্ষার উপায়হীন। কলকাতায় গেলে হয়তো প্রাণে বাঁচার উপায় হলেও হতে পারে। তবে তাই চলো। আবার এখন রাস্তায় ঘাটে ডাকাতের উপদ্রব যা বেড়েছে, সব উটকো ডাকাত। আমি আত্মরক্ষার জন্য একখানা বন্দুক নিয়ে আসি। হাঁটতে হাঁটতে চটিতে পৌঁছে গেলুম, এবার একটু জিরোই। হ্যাঁ, তাই করো। আমি দেখি কোথাও একটু জল খাবার পাওয়া যায় নাকি। তোমরা বসো, আমি যাচ্ছি। ও মাগো, এ কি? এ যে ডাকাত! আমরা ডাকাত, অনাহার আমাদের ডাকাত বানিয়ে নিয়েছে। আজ নরমাংস খাবো। মাগো, বাঁচাও! হে পরমেশ্বর, কৃপা করো। হরে মুরারে মধু কৈট ভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সুরে। হরে মুরারে মধু কৈট ভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌর। এ কি হে বীরবঙ্গ সন্তান, এ হেন আচরণ কাম্য নয়। তুমি ওই রমণীকে নিষ্কৃতি দাও। মা, তুমি এই দুগ্ধ পান করো। ভগবান, আমার স্বামী এখনো অভুক্ত। তোমার স্বামী মহেন্দ্র সিংহ? হ্যাঁ। না, আমি ডাকাত নই, আমি জমিদার মহেন্দ্র সিংহ, তোমাদেরই মতন মানুষ। আমরা মানুষ নই, ব্রিটিশ। ও, আসলে মুখ দেখে ঠিক মনে হয় না ব্রিটিশ বলে। এই বড্ড বাজে বকে তো। একে গ্রেফতার কর এক্ষুনি। আর আমরা হলাম সন্তান দল। উফ, এটা নতুন আপদ। এটা কেউ ধর। সন্তান দল? আজ থেকে তুমিও সন্তান দলের একজন। আক্রমণ করো। হরি হরি সিপাহী মার, সিপাহী মার, হরি হরি সিপাহী মার, সিপাহী। হরি 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 হরি, সিপাহী মার, সিপাহী মার। কিন্তু কি এইভাবে আক্রমণ করলাম? এই কি ডাকাতি নয়? না, আমরা ভারতীয়দের থেকে লুট করা কর তাদের ফিরিয়ে দিই। ও সুর, ও আমাদের মায়ের ডাক, পুত্রের ভালোবাসা, বোনের বিশ্বাস, ভাইয়ের খুনসুটি। ও আমাদের পরিবার। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলা মাতরম। শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, পুল্লক সুমিত ধ্রুবদল শোভিনী, সুভাষিনী
বরদাং মাতরম। সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে, দ্বি সপ্তকোটি ভুজই ধৃত কর কর বালে। অবলা কেন মা এত বলে, বহু বল ধারিণী নমামি তারিণী, রিপুদল বারিণী মাতরম। তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদয়, তুমি মন। ত্বংহি প্রাণের শরীরে, বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা বলি মন্দিরে মন্দিরে। ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমল দলবিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বং। নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম। বন্দে মাতরম। শ্যামলা সরলা সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণী ধরণী মাতরম। আমরা সন্তান, ভারত মাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ। এই অভ্যুত্থান দিকে দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে ছড়িয়ে পড়বে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। During the freedom movement, India's literature, art, and culture exhibited a new sensibility which strengthened the growing idealism of the people who paved the way for national liberation. Let us now watch The Quest for Freedom, depicting the role of art and literature in India's freedom movement. Hello everyone, I have been asked by my teacher to do some research work on the famous literary figures who have helped in our freedom struggle. Rabindranath Tagore, Derozio, Sarojini Naidu, Bankim Chandra Chatterjee. Oh, how I wish I could meet these famous personalities. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. These powerful words can stir up a storm in anyone's heart. You must be wondering that why I'm reciting these lines? Well, that's because today is the Independence Day of the most diverse, alive, and exciting country in the world, India. My India, our India. I'm sure that most of you would love to meet some of the famous literary figures who have inspired a whole generation of Indians to participate in the freedom struggle. Today, I have the pleasure of interviewing 4 such stalwarts, and my first guest for today is a poet who is full of youthful enthusiasm and revolutionary ideas, and is immensely loved by his students, Henry Louis Vivian Derozio. Sir, you are an extremely celebrated intellectual, so instead of using that to further your career, why were you more interested in the plight of the Indians? My dear child, I was more interested in the plight of the Indians, as we were being treated as second-class citizens, whereas we all know that in any society, the importance of citizens' rights is paramount. I am first and foremost an Indian. India is my native land, my motherland, my country. In thy days of glory past, a beauteous halo
circled round thy brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is thy glory? Where the reverence now? Thy eagle pinion is chained down at last, and grovelling in the lowly dust art thou. Thy minstrel hath no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery. Well, let me dive into the depths of time and bring out from the ages that have rolled a few small fragments of these wrecks sublime, which human eye may never more behold. And let the guerdon of my labor be, my fallen country, one kind wish for thee. Hence, I wanted to live and die in my own land and inspire people to fight for her. A beautiful song of love and deep emotion. Next we will talk to the man who has given us the immortal lines Vande Mataram, which has been a rallying cry in our freedom struggle. Shri Bankim Chandra Chattopadhyay. Sir, how did you envision these lines? নমস্কার। Yes, বলছি। I wrote this song in 1870 and later weaved it into the framework of my novel Anandamot. India is my mother, she is our mother, and this song is sung to remind us of her glory and beauty. We should remember that her freedom from bondage is essential for our very own individual freedom. আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথমে দেশের স্বাধীনতা, তারপর আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। And hence I sang Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaja Shitalam, Shashya Shamalang Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Phulla Kusumita Drumadala Shobhini, Suhashini Sumadhura Bhashini, Sukhadang Varadang Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. What an inspiring song! If Vande Mataram talks about the beauty of our Mother India, Gurudev Rabindranath Tagore's numerous writings gave Indians a vision of their nation, a nation free from imperial rule, a nation which we aspire to achieve as a country. Gurudev, how do you visualize such a nation even in those difficult times? I visualized my country as a free land, Chitta Jetha Bhoy Shunyo, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and actions, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. I wanted my countrymen to awake and enjoy a life of dignity and honor. The fact that my words inspired our countrymen to visualize such an India
and fight to actualize that dream is something I am eternally grateful for. I'm sure that this poem is going to inspire generations of Indians. Now we will move on to the woman Rabindranath fondly called Bharat Kokila, and Mahatma Gandhi named her the Nightingale of India, Sarojini Naidu. Ma'am, you have been an integral part of India's freedom struggle. You have also written a thought-provoking poem on the futility of war. Why did you choose such a topic to focus on? I have always dreamt of living in a free India, and I felt that the colonists should remember how much we sacrificed for them. They should remember that we didn't owe them our lives, but we still fought a war which was not ours. Hence, I wrote the gift of India. Is there aught you need that my hands withhold? Rich gifts of raiment or grain or gold. Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drumbeats of duty, the sabers of doom. When the terror and the tumult of hate shall cease, and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones. Remember the blood of my martyred sons. Today, I feel truly blessed to be born in this great country. I hope that we can continue to learn the true meaning of independence, to live freely and to dream freely. We should also remember not to take this freedom for granted, because it is hard earned and we still have to cover a long way to keep it intact. Let us stand together with a mind without fear, And a head always held high. Thank you. Challenge and adversity are meant to let us know who we are. Every challenge that we face inspires us and makes us stronger for tomorrow. Keeping this thought in mind, the Hindi department will now like to present a rendition for the poem Karamveer by the poet Ayodhya Singh Upadhyay Haryod. कर्मवीरों के बिना मातृभूमि मिट्टी बनकर रह जाती। कर्मवीरों के बिना मातृभूमि मिट्टी बनकर रह जाती। कर्मवीरों के बिना यह कृतदासी ही कहलाती। कर्मवीरों ने ही इस देश को विजयी माला पहनाया। कर्मवीरों ने ही इस देश में खोया स्वाभिमान जगाया। कर्मवीर सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्ति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे कर्मवीरों ने अपना सर्वस्व त्याग कर इस देश को आजाद किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा सन 1916 में लिखित प्रसिद्ध कविता कर्मवीर ने देशवासियों को बहुत अधिक प्रभावित किया और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया।
देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते है वही। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं और उनके लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह कहीं नाकाम रहता है नहीं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। ठीकरी को वे बना देते हैं सोने की जली, रेत को करके दिखा देते हैं वे सुंदर खली। वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली, काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल का कली। दूसरों में है खिला देते अनूठे वे कमल, वे लगा देते हैं ऊंचे कांच में भी काम को आरंभ कर यों नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के पेड़ा चला देते हैं वे, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। जो रुकावट डालकर होए कोई पर्वत खड़ा, तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से वे उड़ा। बीच में पड़कर जलधि जो काम देवे गड़बड़ा, तो बना देंगे उससे वे शूद्र पानी का घड़ा। पंथ लगा लेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी, कुछ अजब धुन काम के करने की उनमें है भरी।
सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। We now present a Sanskrit shloka describing the greatness of India as a nation. नमस्ते, अहम अक्षया, अहम आरोही, आवां संस्कृतभाषायां भारतस्य प्रशंसायां एकं गीतं गायावः। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहैरैरनामं निकामं, हिमाद्रे ललाटे पदे चैव सिन्धु, प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम्। धनानं निधानं धरायं प्रदानम्, इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम्। यशो यस्य शुभ्रम् विदेशेषु गीतम्, प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, परं यत्र सर्वे वयं भारतीया, प्रियं भारतं तत्सदा रक्षणीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा रक्षणीयम्। सुधीरा जना यत्र युधेषु वीरा, शरीरार्पणेनाभिरक्षन्ति देशम्, स्वधर्मानुरुक्ता सुशीलाश्च नार्यः, प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम्। वयं भारतीया स्वभूमिं नमामः, परं धर्ममेकं सदा मानयामः। यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः, प्रियं भारतं तत्सदा वन्दनीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा वन्दनीयम्, प्रियं भारतं तत्सदा वन्दनीयम्। धन्यवाद। Next, we have a dance presentation by Rajvardhan Singh of class 7. पिंड सुनीदा तारा मेरे ने जीते ही जाना यारा कभी न हारा।
ही यारा यारा कले नहारा डांस करता है जिम टिम टिम करता तारा डांस करता है जिम टिम टिम करता तारा डांस करता है छक नफरत तू यारा कहता है मेरा ढोल बजदा ओ प्यार ही का सब दा सहारा कहता है मेरा ढोल बजदा It is the sublime beauty of dance that stirs our soul and manages to create an indelible impression. These rhythmic, pulsating and passionate dancers tell us the story of our nation's glory. We now present students of classes 1 to 11 of DPS Ruby Park synchronizing their steps to the song Dhonno Dhanye Pushpe Bhara. ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খোঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী আমার জন্মভূমি ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে পাখির ডাকে জেগে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি
দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি এমন দেশ কি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ফেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী আমার জন্মভূমি। কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। We would now request our head girl, Anushri Tibrewal, to deliver the vote of thanks. I would like to wish a very happy Independence Day to one and all watching the Independence Day program. After a series of innovative efforts to celebrate this historic day, we have finally come to the end of the celebrations. It would not be a suitable end to today's festivities without a word of appreciation for everyone's contributions. We would like to thank all the participants for their active participation. We thank the management for the support and infrastructure they have provided us at Delhi Public School, Ruby Park. We thank Principal Ma'am, Vice Principal Sir and Ma'am, Headmistress Ma'am and the coordinators for their guidance. We also thank the teachers who have worked relentlessly to make this celebration possible even in such unprecedented times. Finally, we thank all the parents for their unflinching faith and support. I would like to remind everyone of the sacrifices made by the freedom fighters to make this day possible, and hope we can learn from them and remember to follow the guidelines to keep every citizen safe. Thank you and Jai Hind.